Namaskar, all of you. How are you all? I hope you all are well at your home and you are also doing your studies. It is your computer class for class 9th, chapter 11. Chapter name is Well Formatted Documents. It is the chapter of word processor, so I write here word processor part 2. Okay, so in our last class, we have discussed about inserting a table, that how we can insert a table in MS Word, and we have discussed presenting data in the table, that how we can present data in the table. Again, for your review, I will explain these two again to you, and in our today's class we will discuss about formatting a table, that how we can format a table, and how we can insert rows in a table, and inserting rows between two rows के बीच में कैसे insert करेंगे table को, and merging and splitting the cell को कैसे merge करेंगे और कैसे split करेंगे. So these all are the topics which we will discuss in today's class. So I'm going to show you my computer screen so that we can easily understand the topic. Okay, so I'm opening a Word document in which we have, this is invitation letter. We have created this invitation letter regarding the practical of chapter 10. So I will also show you today's practical on this document. So first of all, that how we can insert a table, which we have already discussed in last class. I'm again telling you. For inserting a table, click on Insert tab and then click on this Table tab, and you can select your table like this. आप ऐसे भी table को select कर सकते हैं, and you also can insert a table by clicking on Insert Table, and then you can select rows and columns from here like this. So you have written number of column and number of rows here, and click on OK. So number of rows and number of column की एक और table यहाँ पे जो है ये बन गई है. Okay. So for inserting a table in a MS Word document, what you will do, you can click on this insert, and by selecting this you also can select a table. Then you also can insert a table by clicking on this, and you can draw a table by clicking on this. These are the topics which we have discussed in our last class. Now I'm creating a small table here, like I'm writing here roll number. Okay, and again I'm writing here name, then like class. Okay, then again like mobile number. कोई भी इट्स अ डेमो टेबल, तो आप इसमें कोई भी डेटा जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं. लाइक रोल नंबर इज 1 एंड देन रोल नंबर इज 2. नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइक आई हैव रिटन ABC एंड XYZ. कुछ भी नाम आप दे सकते हैं. ठीक है, इट्स ऑल योर चॉइस. इट्स अ डेमो टेबल फॉर क्लास 9th and 10th. ठीक है, नाउ आई हैव given some mobile number like this, and okay, so like this, and here is some address, any address. Okay, so this is a table, and I have created this table that you understand the topic in a better way. Okay, so first of all, formatting a table. Formatting a table means formatting regarding the table, like inserting rows in a table.
आपको किसी भी टेबल में रो कैसे इंसर्ट करनी है, हाउ यू कैन इंसर्ट अ रो इन अ टेबल. So if you want to insert a row here, like there is 3 rows in this table and now you want to create again a row in this table, then you will click on like this cell. इस सेल में हमने क्लिक किया, अब हमें यहाँ पे रो चाहिए, ठीक है. It means below this cell. So you will click on this layout. First of all, keep it in your mind that layout tab is here and again here is also a layout tab. Okay, so when you will insert a table in your Word document, then these two tag will appear. These are the table tools. ये तभी आएंगे जब आप ये टेबल इंसर्ट करोगे. और यहाँ पे डिजाइन टैब और लेआउट टैब है जो कि यहाँ पे भी है, डिजाइन एंड लेआउट. बट दीज टू टैग्स आर बिलोंग टू दिस टेबल. यहाँ पे अगर आप कुछ भी इनमें चेंजेस करेंगे तो वो इस टेबल के चेंजेस के रिगार्डिंग होगा. एंड दिस इज फॉर दिस डॉक्यूमेंट. इस डॉक्यूमेंट में अगर कुछ चेंजेस करना है डिजाइन में, देन यू विल यूज दिस टैब. And if you want to change anything in this table, then you will use this tab. So we will click on layout, and in layout you will get these like insert below, above, left, right. So we want to insert a row below this, then click here and click here. So यहाँ पे एक और रो आ गई, आप देख रहे हैं आपके सामने, one more row is here. So like this you can insert any row on above and below the cells. Okay, now again one more method is here. If you want to insert a row, then right click here where you want to insert a row, right click करो and then click on insert, and here is the insert row above, insert rows below. तो अगर मैंने बिलो पे क्लिक किया तो अगेन यहाँ पे एक और रो आ गई है, ठीक है. अगेन वन मोर मेथड टू इंसर्ट अ रो. आपको अगर आप अपने पीसी से अगर टैब प्रेस करेंगे तो जैसे ही आपका जो कर्सर है वो लास्ट वाले सेल पे आएगा, देन अगेन जब आप टैब प्रेस करेंगे तो आपके जो रोज है वो इंसर्ट होती जाएगी. सो लाइक दिस you can insert some rows in your table. Okay, next topic is that how you can insert a row between two rows. How you can insert a row between two rows. किसी भी दो रोज के बीच में आप कैसे एक रो इंसर्ट कर सकते हैं. सो आई एम राइटिंग हियर सम नेम like random name. Okay, now like I click this. So like this is a random table like demo table. Okay, so if you want to insert a new row between these two rows, like 2 और 3 के बीच में आपको बाद में याद आया कि किसी एक स्टूडेंट का नेम रह गया या कोई एक ऐसी फील्ड है जो आप यहाँ पे लिखना भूल गए और आपको बाद में याद आया, देन व्हाट विल यू डू, क्लिक ऑन लाइक 2 जो सेल है उस पे हमने क्लिक किया एंड देन क्लिक बिलो. तो जब हम क्लिक बिलो पे क्लिक करेंगे तो 2 और 3 के बीच में एक नई रो आ जाएगी. दिस इज लाइक दिस. ओके, सो 2 और 3 के बीच में एक नई रो हमारे पास आ गई. सो लाइक दिस यू कैन इंसर्ट एनी रो बिटवीन 2 रोज. ओके, किसी भी 2 रोज के बीच में आप कोई भी थर्ड रो इंसर्ट कर सकते हैं लाइक दिस. लाइक इफ यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू रो in between 4 and 5, then click on 5 and now you will click on insert above क्योंकि हमें 4 और 5 के बीच में एक नई रो इंसर्ट करनी है. then like this we can click any row, and if you want to delete any row then click on that row and click here like delete rows. So that row will be deleted. Like if you want to delete this row, click here and then click on this and then click on delete rows. तो आपकी जो रो है वो डिलीट हो जाएगी ऐसे. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग सेल्स.
So what is merging and splitting cell? Like merging means like we want to merge all these cell. इन सारी cells को हमें merge करके एक ही cell बनाना है. So this is what merging. And splitting means we want to create 2 cell or 3 cell with this one cell. ठीक है, इस एक सेल से हमें 2-3 cells create करनी है. So this is what, this is splitting the cells. Okay. So I'm inserting a row above. Okay, यहाँ पे मैंने एक रो यहाँ पे insert कर ली because I want to write here a school name like Rawat Public School. Okay, so I have written here Rawat Public School. So I want to give a heading of this table like class or school name. So now I will select the columns which I want to merge. ये सारे columns मुझे merge करने हैं. So select these columns and then click on this merge cell. ठीक है, तो जैसे ही आपने ये सारे columns को select किया, now I'm giving it center. Okay, so मैंने क्या किया, मैंने सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया और टेक्स्ट को सेंटर दे दिया. तो टेक्स्ट जो है हमारा वो सेंटर में आ गया और ये सारे जो कॉलम्स हैं वो मर्ज होके एक सिंगल सेल बन गया. अब ये एक सिंगल सेल जो है बन गया है, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं. तो दिस इज व्हाट, दिस इज मर्जिंग द सेल. नाउ हियर इज लाइक स्प्लिटिंग द सेल. सो आई एम इंसर्टिंग वन मोर रो. मैंने एक और रो इंसर्ट कर ली है. Now in this cell I want to create 2 or 3 cells in this single cell. Then click on this split cell, and how many column and how many rows you want. Like I want 3 column and 2 rows in this. ठीक है, इस एक कॉलम में, इस एक सेल में मुझे 3 columns and 2 rows चाहिए. तो देखो कैसे आएगी. क्लिक ऑन ओके. सो नाउ these are what, 3 columns and 2 rows are here. So like this you can split your cell. So this is what, this is splitting the cell. So in today's class we have discussed about that how you can insert a table, how you can present data in the table, and then we have discussed about like how you can insert a row in the table, and how you can insert a row between 2 rows, and then we have discussed about this merging cell. Merging cell क्या होता है, when you merge one or more column together, then it is merging. And splitting means when you split a cell in number of like 2, 3, 4 cells, then it is what, splitting the cell. So these all are about the today's topic: formatting a table, inserting rows in a table, inserting rows between 2 rows, and merging and splitting cell. These were our topic which we have discussed today. So this is all about today's class. Your class homework I will share in your group. So do complete your homework on time and submit your notebooks in the school, and do all the work in computer notebook. I will share your homework in your class group. So do complete it, and if you have any type of query, then you can ask me in query class, online query class. So join query class if you have any type of doubt regarding this topic. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe, and keep learning. Thank you so much.